निकाल लो. It is predicted that water will replace Kashmir. It is predicted that water will replace Kashmir as a major cause of conflict. Water will replace Kashmir as a major cause of conflict between India and Pakistan. Between India and Pakistan, full stop. Recently, radical elements in Pakistan have started to talk about water wars. That is, I've talked about water wars. That is, if water will not flow. Yes, if water will not flow, then blood will flow. If water will not flow, then blood will flow. Subheading Pakistan's argument. Subheading Pakistan's argument. Within this, write down. There are certain myths in Pakistan. There are certain myths in Pakistan. Number one, Indus Water Treaty. Indus Water Treaty is not favorable. Indus Water Treaty is not favorable to Pakistan. Indus Water Treaty is not favorable to Pakistan. Next, India uses water. India uses water as a strategic weapon. India uses water as a strategic weapon. Next point, India takes away all the energy. India takes away all the energy of water from Indus. All the energy of water in Indus. Full stop. Next subheading. Projects under dispute. Projects under dispute. इंडिया के आर्गुमेंट बहुत बड़े हैं, बाद में आएंगे. Projects under dispute. Number one, Baghlihar Dam. Baghlihar Dam. Next, Kishan Ganga Dam. Baghlihar Dam, number one. Number two is Kishan Ganga Dam. Number three, Tulbul Navigation Project. Number three, Tulbul Navigation Project. Number four, Ratle. R-A-T-L-E. R-A-T-L-E, Ratle Hydropower Project. ठीक है. अब नेक्स्ट सब हेडिंग, इंडस वाटर ट्रीटी. Indus Water Treaty. This treaty is considered as the most successful. This treaty is considered as the most successful example of water sharing.
most successful example of water sharing, full stop. It is also an example of functionalism. It is also an example of functionalism. Full stop. Next para. Oh, salient provisions of the TT are number one, the Indus River system is divided. The Indus River system is divided between India and Pakistan. Between India and Pakistan with Indus. Between India and Pakistan with Indus, Chenab and Jhelum. With Indus, Chenab and Jhelum for exclusive use of Pakistan. Indus, Chenab and Jhelum for exclusive use of Pakistan, and the remaining three within bracket likhiye Ravi, Byas and Satluj. And the remaining three, Ravi, Byas and Satluj, are for exclusive exploitation of India. Are for exclusive exploitation of India. Next provision. हो सकता है बट पैदाइशी एक्सप्लॉइटेटिव है हम. Next provision is India being an upper riparian. India being an upper riparian country has been given rights to use ICJ. Has been given rights to use ICJ for non-consumption purposes. ICJ for non-consumption purposes. Full stop. For instance, navigation and hydroelectricity. Full stop. For instance, navigation and hydroelectricity. Okay. Next provision. India can use the ICJ rivers. India can use the ICJ rivers within bracket western rivers. India can use the ICJ rivers within bracket western rivers only with the consent of Pakistan. Only with the consent of Pakistan. Full stop. It means Pakistan can raise objection. It means Pakistan can raise objection to any project. Pakistan can raise initiated by India on ICJ. Initiated by India on ICJ. अभी तो लिखवा है सब में. इंडिया डिस्प्यूट रहा ना, किसी में वर्ल्ड बैंक पे चला गया, किसी में PCA पे चला गया. आई टोल्ड यू ना इनिशियली, पर सब में फेवरेबल जजमेंट आई इंडिया के. वो रेज हर पे करता है. तो बताया तो था इसमें वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था.
ये टीटी नेहरू के टाइम पे साइन हुई थी ना, तब तो था भी नहीं कुछ। शिमला अग्रीमेंट तो बहुत बाद में आया है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया, ये पहले नेहरू के टाइम पे साइन हुई थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट of permanent Indus Water Commission. Establishment of permanent Indus Water Commission with commissioners from both sides. Permanent Indus Water Commission with commissioners from both sides to overlook the commitment of both parties. To overlook the commitment of both parties. Okay. Full stop. Next, write down Brahmchillani's analysis. Brahmchillani's analysis. Within this, write down, he has opined, OPINED. He has opined that India has compromised. He has opined that India has compromised on its water sovereignty. India has compromised on its water sovereignty by signing this treaty. By signing this treaty, full stop. Basically, around 80% of the water, around 80% of the water of Indus River system, 80% of the water of Indus River system flows through ICJ. Flows through ICJ. Full stop. Next point. He argues that nowhere in the world, the upper riparian state, has agreed to such kind of provisions. The upper riparian state has agreed to such kind of provisions. Full stop. In this case, the treaty gives almost an absolute veto. In this case, the treaty gives almost an absolute veto to Pakistan. And India's rights. Under the treaty, are superficial. Under the treaty are superficial because Pakistan raises objection to every single Indian project. Pakistan raises objection to every single Indian project. तो सजेशंस में वी हैड अंडरस्टूड, क्या करें इसका, क्या करें इस ट्रीटी का? आईसीजे हैज रूल्ड इट इज परमानेंट इन नेचर, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, पर उसके लिए बातें करनी पड़ेंगी, बातें हम करते नहीं हैं, ठीक है क्या, ऑब्वियसली बात है। कोशिश करते रहें कि नेगोशिएट हो जाए, नेगोशिएट नहीं होती तो वी शुड कीप ऑन मेकिंग आवर प्रोजेक्ट। उन्हें रेस करना है, करने दो, जब रेस करेंगे हम देख लेंगे, जहाँ भी वर्ल्ड बैंक पीसीए जहाँ ले जाएंगे। तो इंडिया हैज वर्क लाइक दैट, वी हैव बीन कीप ऑन डूइंग द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो ले जाते हैं जिस भी बॉडी में, तो वी डिस्कस दैम, कर सकता है वहां भी हम रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, इट्स अ कोड, इट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट, ठीक है। बट नॉनदलेस लिख लेते हैं सजेशंस, सब हेडिंग सजेशंस, सजेशन में लिखिए ब्रह्मचल्लानी आर्ग्यूज, ब्रह्मचल्लानी आर्ग्यूज that India should not, Brahmchalani argues that India should not, नहीं आईसी, यस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, नहीं वो कह रहा है कि इंडस चेनाब झीलम कमीशन है क्या कोई, नहीं ऐसा नहीं है, फॉर इजी रिमेम्बरिंग ना हमने इंडस चेनाब झीलम को आईसीजे बोल दिया ताकि याद रहे सबको। नंदलेस क्या लिखा है ब्रह्मचल्लानी, हाँ इंडिया शुड नॉट ओबे, India should not obey the provisions of the treaty. India should not obey the provisions of the treaty. Full stop. He argues that this is, very unlikely to happen. This is very unlikely to happen because India has a syndrome. This is very unlikely to happen because India has a syndrome to appear as a responsible world power. India has a syndrome to appear as a responsible world power. ठीक है, full stop. Next para. So to begin with, India should leave. To begin with, India should leave its position in Indus Water Commission vacant. India should leave its position in Indus Water Commission vacant. Vacant, खाली छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा. Vacant, full stop. Next para. India should continue. India should continue to create establish projects. India should continue to establish projects even if Pakistan raises objections. Pakistan raises objections, but the precondition is that India should maintain. But the precondition is India should maintain. So India should maintain a stable and undisputed democracy. India should maintain a stable and undisputed democracy and ensure economic prosperity. Full stop. आपको समझ में आया लास्ट लाइन क्या कहना चाह रही है? Can anyone tell me what he is trying to say in the last line? है वसड़ में नहीं बढ़ना, थोड़ा स्कॉलरली बोलो. प्रोजेक्ट के बाद
द रीजन इज हमने पावर समझी थी, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर. देखिए वाई यूएस लाइक इंडिया, ऐसा थोड़ी ना है कि यूएस लाइक एवरीवन. देखिए यूएस लाइक सम कंट्री बिकॉज ऑफ रीजंस. In current context, it likes India as a balancer against China because India is a democracy. If India's credentials of democracy will decline, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो इंडिया विल बिकम अ लेस अपीलिंग सॉफ्ट पावर, पहली चीज. सेकंड, विद डिक्रीजिंग इकोनॉमी यू विल नो लॉन्गर बी अ बिग मार्केट. अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट इंडिया में क्या है? इंडिया हैज अ लार्ज मिडिल क्लास, इसलिए उसे इंटरेस्ट है. अमेरिकन कंपनीज कैन कम टू इंडिया. अनडिस्प्यूटेड, क्या लिखा था हमने अनडिस्प्यूटेड डेमोक्रेसी के बाद? एंड इंश्योर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. अनडिस्प्यूटेड डेमोक्रेसी एंड इंश्योर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. हाँ, तो देखिए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का लॉजिक क्लियर है. बिकॉज इफ यू आर इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, एवरी कंट्री वुड लाइक टू ट्रेड विद यू, एवरी कंट्री वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री. अगर आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं हो तो व्हाट विल हैपन? द कंट्रीज विल लूज देयर इंटरेस्ट इन यू. और अगर आप सिग्निफिकेंट नहीं हो तो नो कंट्री विल लाइक. अमेरिका के लिए इंडिया इज अ बिग मार्केट of a big middle class which American companies can sell product to Indians. So India is a big market, and same reason है China के लिए. China do some kind of aggression, but China openly side नहीं ले रहा. If you see, China openly aggression नहीं करता है, openly criticize नहीं करता है. Why? The reason is because China also sees India as a big market. उसके प्रोडक्ट के लिए we are a very big market. खासकर हमने पढ़ा था ना फार्मास्यूटिकल एंड टेलीकॉम में, इट इज अ वेरी डोमिनेंट पावर. तो क्यों अपनी मार्केट डिस्टर्ब करोगे? नंदरलेस इट कीप्स ऑन डूइंग व्हाटएवर ऑन द, क्या बोलते हैं उसे, बॉर्डर पे. इट्स अ पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक वाला. या आप यू कीप ऑन शोइंग द पावर दैट यू कैन कमिट अग्रेशन इफ रिक्वायर्ड. हल्का पुल्का अग्रेशन जो होता है ना, इट इज टू कीप रिमाइंडिंग द पावर दैट यू आर देयर, यू आर वॉचिंग एंड यू कैन कमिट अग्रेशन इफ रिक्वायर्ड. बट पूरा अग्रेशन नहीं करना होता, बिकॉज इफ यू कमिट द एंटायर अग्रेशन तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक रिलेशंस विल ब्रेक डाउन, something China will not like. तो इसलिए वो keep on doing small incursions, कोई बड़ा नहीं जिससे Indian government had to respond in a big measure. Clear है? तो this is what is saying. अगर आप democracy maintain करते हैं इंडिया में, if you maintain a good democracy and a good economy, so what will happen? You will still be a very appealing country for the world. और as long as you are an appealing country for the world, अगर आप Indus Water Treaty को क्या बोलते हैं अंडरमाइन करेंगे भी, कोई कंट्री पाकिस्तान का साइड नहीं देगा. But if you are not a good economy or a bad democracy, then what will happen? They will start pushing sides. कहेंगे चलो आपका काम हो गया, now second party. चलिए नेक्स्ट लिखिए. तो लास्ट इशू वी हैव टू राइट ट्रेड रिलेशंस. सॉरी, इंडियाज आर्ग्यूमेंट. इंडिया कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता इसमें. इसमें ब्रह्म चिल्लानी आर्ग्यूमेंट देते हैं चीख चीख के. उनका नाम चिल्लानी शायद इसलिए पड़ा होगा, ज्यादा चिल्ला रहे होंगे. बट इज अ वेरी गुड स्कॉलर. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया नेबरहुड पे बहुत अच्छा लिखते हैं. ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं हमारे ट्रेड रिलेशंस? हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस वी हैव? वर्चुअली नन. वर्चुअली लीगली तो नन है, इलीगली बहुत है. ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है. देखिए हम समझते हैं डिमांड को. इकोनॉमी में द फंडामेंटल रूल इज एवरी डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. इफ यू डिमांड फॉर एग्जांपल अ शू, somebody will make it because for that person that shoe is an economic opportunity. अगर if I, for example, government of India comes to me, says ये लो 1 करोड़ रुपए, do business, I will say thank you. नहीं, निकलो यहाँ से. Why? Because if you are giving money to me and there is no demand of my product in the market, तो मुझे कभी तो वापस करना होगा ये 1 करोड़. I have to return. चाहे आप मुझे 0 इंटरेस्ट पे दे रहे हो, I have to return this 1 crore once upon a time. कभी भी I have to return it. So thing is I will not take it. But if there is a demand for my product in the market, चाहे मुझे किडनी लोन पे रखनी पड़े, किडनी मॉर्टगेज करनी पड़े, मैं कर दूंगा. Why? Because there is a demand of my product. If I increase my capacity, I can sell more. Sell more means more profit. More profit means I will pay back the loan. किडनी मॉर्टगेज करके भी बच जाएगी. नहीं, किडनी की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन if you take 1 crore rupees on 0% interest with no demand, then you surely will have to sell your kidney once day. Clear है?
तो दैट्स द लॉजिक हियर इफ यू हैव गुड डिमांड वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, बिकॉज ऑफिशियल ट्रेड हमारे पास जीरो है, नील। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज विथड्रॉन अ स्टेटस वी कॉल एमएफएन। इकोनॉमिक्स शायद आपका हुआ नहीं ना किसी का भी, कुछ का तो हुआ है मुझे पता है। व्हाट इज एमएफएन स्टेटस? हाँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन तो है, कहाँ पे है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन? क्या होता है एमएफएन स्टेटस, कोई बता सकता है? ट्रेड पॉलिसी अच्छे हो, प्रायोरिटी नहीं हर्ष, प्रायोरिटी नहीं होता है। अच्छा, कहाँ पढ़ा होगा यही बता दो। हैं? नीचे पर कहीं तो पढ़ा है। आप लोगों ने कहाँ पढ़ा? आपने तो इकोनॉमिक्स कर लिया कितने महीने पहले। कहाँ पे है मोस्ट फेवर्ड नेशन, विच चैप्टर? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चलो ठीक है। बैलेंस ऑफ क्या बोलते हैं, पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डब्ल्यूटीओ। अब बताओ, तीन तो दे दिया, चार चौथा क्या ऑप्शन लोगे? डब्ल्यूटीओ में ही है वैसे, गैस तो लॉजिक था। डब्ल्यूटीओ में आप पढ़ते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में हम पढ़ते हैं मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। द 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज, जिसने नहीं पढ़ा उसे पढ़ाया जाएगा। वी आर 4 मोड ऑफ सर्विसेज, जिसमें इंडिया क्लेम करता है कुछ सर्विसेज, यूएस क्लेम करता है अदर सर्विसेज, तो देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन। तो इसमें हम पढ़ते हैं द लॉजिक ऑफ एमएफएन व्हिच इज एक्सटेंडेड टू ट्रेड आल्सो। तो इट इज अ स्टेटस दैट यू गिव टू अ नेशन इन डब्ल्यूटीओ which simply says that you will not treat that nation unfavorably। देखिए टर्म है मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका मतलब ये नहीं है you will give priority to anyone or benefits to anyone, no, it simply means that you will not treat that nation as a subordinate partner or with degradation। मान लेते हैं India has good trade with China, मैं for example I want to import phones with China from China and I can import same phones from Pakistan। So if I give MF1 status to Pakistan, then I cannot dilute provisions of phone for China because Pakistan has MF1 status। So if I dilute provisions of phone import, then I have to dilute for both the countries। मैं किसी एक को फेवर नहीं कर सकता। That is called MF1 status। इसका प्रायोरिटी से कुछ लेना नहीं है। Simply means normal trade relations without any incentive or disincentive। क्लियर है? तो ये एक लौता स्टेटस हमने दिया हुआ था। हाँ, ऐसी बकैती बताने के लिए कि वी लव यू वेरी मच वाला न्यू ईयर रेजोल्यूशन मान लो इसे। हैं? नहीं, इसका मेन रीजन बताया ना, यू विल नॉट ट्रीट दैट कंट्री फ्रॉम डिसएडवांटेज। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रिलेशंस में है, फॉर एग्जांपल यू लाइक टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम चाइना, इट इज चीपर, तो क्या आप क्या करेंगे? यू विल रिलैक्स प्रोविजन फॉर चाइना, नॉट फॉर पाकिस्तान। बट अगर पाकिस्तान हैज एमएफएन स्टेटस, तो इट इज अश्योर्ड कि आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, मतलब डिसएडवांटेज नहीं रहेगा वो कंट्री, ये उसे क्लियरिटी हो जाती है। इन ट्रेड रिलेशंस विद यू दैट कंट्री विल नेवर बी अ डिसएडवांटेज पार्टी। लॉजिक ये है। नॉनदलेस, तो हमारा एमएफएन स्टेटस था, हमने दिया हुआ था पाकिस्तान को, पाकिस्तान नेवर गेव टू अस। उसने बोला ठीक है सोचेंगे, एक तरफा प्यार चल रहा था हमारा। अल्टीमेटली है साक में, हाँ सबको दे रखा है मोर, इंडिया ने तो सबको ही दे रखा है मोरलेस, हर कंट्री को। पर पाकिस्तान से हमने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया? आफ्टर दैट पठानकोट एंड ऑल, पठानकोट एंड ऑल, बिकॉज देखिए इट्स अगेन अ क्लासिकल केस ऑफ बिजनेस डिलेमा, बिकॉज यू हैव विड्रॉन एमएफएन स्टेटस फ्रॉम अ कंट्री जिससे वैसे भी तुम्हारी ट्रेड कुछ खास थी नहीं, बट यू हैव ब्रोकन द लास्ट ब्रिज अलाइव। अब ऐसे चाइना के केस में देख लीजिए, चाइना इज डूइंग अग्रेशन। Every day there is a report that China has come this much, China has built this in this area and that area. Every day it is doing something on our border. But yet government of India does not break relations with China. इसका advantage क्या है? It's a bridge. If I have made investment in your future, then I have a stake in your outcome also. I would like you to be successful because I have made an investment. अगर मैंने investment नहीं करी तो I don't care आप successful हो या ना हो। You got the point? It is a bridge among all the issue. If I make investment in China, China make investment in us, so it creates a linkage which provides a compulsion to stay together even if we do not like each other. Something we have nothing with Pakistan. So after current MFN status withdrawal, we have no link whatsoever with Pakistan.
वर्चुअली सीज, ना हम बात कर रहे हैं ना एमएफएन, इकोनॉमी हमारी चल रही है, वर्चुअली वी हैव नथिंग विद पाकिस्तान. So that's why it is said that we have given Pakistan on a platter to China. वैसे भी वो पाकिस्तान चाइना के पास गलवान वैली का क्या है, गलवान वैली बताया तो था, ट्रांसकाराकोरम ट्रैक जो वही तो गलवान वैली है. सॉरी गलवान नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, वो शक्शाग में वैली है. सॉरी सॉरी सॉरी, सही नेम है इनमें. क्वेश्चन क्या है अमर, ये बताइए. नंदलेस ट्रेड क्लियर है सबको, हमारा कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, बट इट इज प्रेडिक्टेड दैट आर व्हाट वी कॉल दैट इललेजिट ट्रेड, बिकॉज ट्रेड होती है बॉर्डर पे. और खासकर आई बिलीव आपने उड़ता पंजाब तो देखी होगी, उसमें जो खासकर कोकेन की ट्रेड जो होती है, दे पैक्ड इट अप एंड दे थ्रो इट फ्रॉम द कहते हैं बार्ब्ड वायर्स. वो कितना रोक लेंगी. ऑन अदर साइड यू हैव अ पार्टी दैट पिक्स अप एंड डिस्ट्रीब्यूट. So that's why you see wherever we have borders, foreign borders, there is too much drugs consumption. Pakistan se we have your Punjab. On other side, on northeast we have all our northeastern state, क्या बोलते हैं, Nagaland, Manipur and all. They are also very high in drugs consumption. Northeast में बहुत ज़्यादा drug consume होता है. The reason is because it is very near to our enemy country like China. म्यांमार से कुछ खास relation हमारे बच्चे नहीं, and Bangladesh. Nonetheless, क्लियर है, कुछ खास नहीं है इसमें. तो क्वेश्चन कम्स इज, शुड वी ट्रेड? शुड वी ट्रेड? वी शुड, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉट डूइंग एनी ट्रेड. देखिए, आई एम ऑलवेज यूटिलिटेरियन. यूटिलिटेरियन मींस अ पॉलिसी दैट गिव्स एनी रिजल्ट शैल बी अडॉप्टेड. चाहे वो आपकी सरकार को थोड़ा बदनाम कर दे लेकिन देश को बचा ले. दैट मे कॉम्प्रोमाइज योर गवर्नमेंट बट विल सेव द नेशन. जैसे इंडिया हम यूएस में करेंगे, अ डील दैट वाज साइंड बाय मनमोहन सिंह विद यूएस गवर्नमेंट. मैंने शायद बताया भी, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. उसमें मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट सर्वाइव्ड ओनली बाय वन वोट. ही सेड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट मी, आई डोंट केयर, आई विल साइन दिस डील. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट अ स्टेट्समैन एंड अ पॉलिटिशियन. अ पॉलिटिशियन प्रोटेक्ट्स देयर, बोलते हैं, पावर फर्स्ट. अब जैसे आप फार्म लॉस का एग्जांपल लेते हैं, फार्म लॉज अगर इतना ही मास्टर स्ट्रोक था तो वापस नहीं लेना चाहिए था. Just because you felt that you could lose UP election, you took it back. That is not how statesmen work. Statesmen may compromise their chair, their power for the nation. If you feel like it is in the favor of nation over long time, so why you took it back? Just because you think that you could lose UP election. So that means you give more preference to your election than reforms. Clear है? तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल वेयर ही इवन सैक्रिफाइस्ड. एक वोट से बची सरकार. अगर एक वोट इधर हो जाता तो मनमोहन सिंह सरकार चली जाती, ओवर अ डील व्हिच ही सेड आई विल साइन, जो करना है कर लो. क्लियर है? स्टेट्समैन हो वाला. तो यहीं पे हमें वो करना है. व्हाट वी हैव टू डू इज, even though it will give bad publicity, I know, because Indian media has used too much Pakistan in elections. Indian media uses too much of Pakistan for domestic politics. So of course it's a bad publicity मिलेगी. But over long term it could be better. हाँ, फोरम, जो फॉरेन फोरम्स है उसमें नाम अच्छा होगा. देखिए, एक चीज हमेशा रखिएगा, यू कैन फूल योर डोमेस्टिक ऑडियंस बट नॉट द इंटरनेशनल ऑडियंस, क्योंकि वो हमेशा दे विल लुक फ्रॉम थर्ड पर्सपेक्टिव. जैसे चाइना के केस में, चाइनीज पीपल विल ऑफ कोर्स सपोर्ट हांगकांग एनेक्सेशन टू चाइना. हांगकांग वाले नहीं करेंगे. लेकिन फॉर अस व्हाट वी विल कंसीडर चाइना एज अ अग्रेसर. Okay, we are a third party. We are neither invested emotionally in Hong Kong or China, but we see that Hong Kong is a democracy, largely successful, not completely, but largely. China is not. So हमारी नजर में what China is doing is aggression, but Chinese की नजर में it will be patriotism, that they are bringing one country, one law. So I always said where you stand changes your perspective. Where you stand, आप जहां पे भी हो. फॉर एग्जाम्पल, a lot of people criticize other religion कि भाई उस रिलीजन में ये होता है. भाई, if you would be born in that religion, you would be justifying the same. You got the point. We always see things from a perspective. कोई भी neutral नहीं होता. And our perspective is shaped by our upbringing. In which religion you were born, in which gender you were born, in which state you were born, in which country you were born. That all shapes your narrative, your ideas. That all shapes what you are. और उसके बेसिस पे आप जज करते हैं. एग्जाम्पल,
when Britishers captured India, what they said, why we are capturing you? क्या कहा था हमने? Civilizational mission. They said we are civilized people, we eat by fork and knife. You are so uncivilized people, eat by hand. Logically, so they said we will civilize you. So basically they interpreted our culture from their culture. और उस हिसाब से तो हमारा बैकवर्ड देखा उन्हें. The same way you may interpret some other religion. कोई अदर रिलीजन का है, कुछ पहन के आया है, कुछ ओढ़ के आया, तो यू विल स्टार्ट इंटरप्रेटिंग कि हाउ बैकवर्ड. बट इफ यू वुड बी बोर्न इन दैट रिलीजन, यू मे बी जस्टिफाइंग द सेम. क्लियर है ना? इट वर्क्स. ऑलवेज रिमेंबर, ऑल लॉज आर मेड फ्रॉम पॉपुलर मोरालिटी. यूसीसी करवा दिया आपको पॉलिटी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो व्हाट इज द बिगेस्ट इशू विद यूसीसी? कहने को इट इज यूनिफॉर्म सिविल, पर ये कभी नहीं होगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम मेजॉरिटीज पर्सपेक्टिव. एग्जाम्पल लेते हैं यूएस का. यूएस इज अ वेरी लिबरल कंट्री, वी हैव डिस्कस. इन यूएसए द बिगेस्ट इलेक्टोरल इशू इज अबॉर्शन. इमेजिन दिस, a country which call itself so liberal, the biggest issue of election is abortion. इंडिया में have you इंडिया में आई बिलीव सबको पता होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ठीक है, इसमें 24 वीक है ना, आई बिलीव 24 वीक्स तक यू कैन a woman can go for abortion by her own. अब तो amendment के बाद she does not require the consent of any other party. Even unmarried woman can go for abortion. तो इंडिया में it is not a debate, because Indian culture understand is very naturally. A woman has a right over a body. But अब वेस्ट में देखिए, अमेरिका, so called harbinger of human right and all, for them abortion is a big issue. Why? Because that is a Christian country, and Christianity believes as soon as the egg and the sperm fuses, the life starts. So for them, killing a fetus is like killing a human being. So for outlaw कर दिया उन्होंने. तो you see, उनका जो कानून है, that is from their morality and that determined by majority. ये हमेशा याद रखिएगा, हर crime in every country is always determined by majority. So so-called uniform civil code will be a majority civil code. जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान brings uniform civil code, तो वो क्या लाएगा? यही प्रोविजन लाएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे बुरखा पहनेंगे अब. Always remember this. So nonetheless, why I'm saying all this, to understand this, you have to differentiate a statesman with a politician, and a statesman will follow this. Do trade, do talks. और जहां पे भी हमने डिस्कस किया था, wherever पाकिस्तान shows some बोलते हैं नटखटपना, और wherever it shows terrorism and all, we will respond by bullets. जहां जरूरत है we will use bullet, जहां जरूरत है we will do the talks. Of course कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त करने से डरेगी. You think the current government, if Congress comes to power in center, even if it will also resist talking with Pakistan. क्यों? Because Indian media has used Pakistan too much for internal diplomacy, internal politics. ठीक है, clear है? It's a very very bad precedence and a very big dilemma. उन्हें पता था strong man's dilemma. आप उसमें अगर फंस गए, if any politician gets into strong man dilemma, तो भूल जाओ फिर वो नेशन के लिए काम कर पाएगा. फंस जाता है फिर बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, तड़प सकता है वो अंदर ही अंदर, उससे ज्यादा कुछ नहीं. Clear nonetheless that there is too much illegal trade, there is no formal trade, and if we go by the theory of functionalism, so what will happen if we have trade? We can create a bridge which can be used. I am not saying which will be used, but I am saying it can be used for better purposes. कुछ भी करेंगे आप, ट्रेड करेंगे. ट्रेड से देखिए पहले जमाने में ट्रेड से कितने आइडिया स्प्रेड होते थे. आपका बुद्धिज्म वगैरह कैसे स्प्रेड हुआ? हमने बुक फेंक के मारी थी चाइना के ऊपर? नहीं ना, इट वाज स्प्रेड बाय, ऑफ कोर्स ट्रेड से गए, स्कॉलर्स गए. दैट इज हाउ यू स्प्रेड योर कल्चर. ये थोड़ा ना बुक लिखी और फेंक के मारी, लो चाइना वाले पढ़ लो इसे. तो ट्रेड विल लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इससे फायदा होगा. चलिए कोई नहीं, लिखिए. लास्ट इज ट्रेड इशू. विद इन दिस राइट डाउन, initially India and Pakistan, इनिशियली. अच्छा एक सेकंड, मैंने आपको यूसीसी का तो बता ही दिया था. यूसीसी में सॉल्यूशन क्या पढ़ा है आप लोगों ने? गोवा में है.
तो देखिए देखिए अगेन आई बिलीव इट्स अ बैड आर्ग्यूमेंट दैट यू वांट टू अचीव यूनिटी बाय यूनिफॉर्मिटी. It's a very bad argument. Unity by diversity. If a Tamil person does not want to learn Hindi, नहीं impose करेंगे हम. If a Sikkim person does not want to learn Hindi, नहीं impose करना है. If you do not want to learn English, तो impose नहीं करना है. तो tell your parents ये बात, ठीक है? अब तो देखिए one thing that I told you तो मैं आपको बताता हूँ because I have discussed MCC. This is something I conceptualize for interview. क्या इंटरव्यू में मुझसे UCC पूछ लिया जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो I conceptualize an idea of minimum civil code. Because there are certain provision. देखिए आप यूसीसी लाएंगे nobody will agree, खासकर minority will not agree, खासकर this government में, because this government has a image problem. ठीक है, अगर अच्छा भी करना चाहेंगे ना तो भी minority समझेगी बुरा करने आए हैं. ठीक है, तो this government has a image problem, they are less likely to bring UCC. आप देखिए CAA लाए कितना ड्रामा हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम. पर MCC I believe more or less everyone can agree. Minimum civil code means certain elements in all religions that we all can agree that it has to be rooted out. So this could become first step. First bring MCC rather than UCC. Regulate very basic provision. जैसे इस्लाम में you can regulate निकाह हलाला, ठीक है, आप other practices you can regulate, especially for women. आप बाकियों में हिंदुओं में आप घूंघट की जो प्रथा वगैरह होती है, you can regulate all these practices. After that, once this is in operation, for example, 10 years, 20 years, तो इससे क्या होगा? The minority will get the confidence कि हाँ भाई, a UCC can come. So you got the point. It will act like a bridge. It will act like first step to UCC. अब सीधा UCC impose कर दोगे तो I don't believe कि people will agree. बेमतलब के division होंगे इंडिया में. MCC में we will cover only those part in every community which we believe are very very bad, which should be eradicated, and then we can move to UCC. It's up to you. You can choose this idea or not. This is what I conceptualize. ठीक है, लिखिए. Initially, India and Pakistan were largest trading partners. Initially, India and Pakistan were largest trading partners, but later on it got changed. Later on it got changed due to the high level of antagonism. Due to the high level of antagonism between India and Pakistan. High level of antagonism between India and Pakistan. Full stop. Next para. India granted the MFN status. India granted the MFN status to Pakistan in 1996. MFN status to Pakistan in 1996. Full stop. The Pakistan promised to reply. The Pakistan promised to reply, comma, but never did. (1996). The Pakistan promised to reply, but never did. WhatsApp chat वाली बात हो गई है तो. ठीक है, ये सेंटा और इसने देख लिया, रिप्लाई नहीं करा. ठीक है, तो उसने हमारा WhatsApp chat वाला कर दिया हिसाब किताब. Nonetheless, next para. After the aggression of Pakistan, after the aggression of Pakistan-based terrorist element. कौन सी 1990 में? 1996 में दिया था हमने स्टेटस. पाकिस्तान टेरर एलिमेंट की कह रहा हूं, जो हर दिन होता है. पाकिस्तान क्या लिखा? पाकिस्तान टेररिस्ट एलिमेंट ऑन इंडिया. Semicolons. India has withdrawn the MFN status under Modi government. India has withdrawn the MFN status under Modi government. Next subheading लिखिए, analysis by C. Raja Mohan.
Analysis by C. Raja Mohan. Analysis by C. Raja Mohan. Within this, write down. He has argued that the withdrawal of MFN has burned the withdrawal of MFN has burned the last bridge existing between India and Pakistan. Has burned the last bridge existing between India and Pakistan. Full stop. He argues that the withdrawal of MFN will benefit no one. Withdrawal of MFN will benefit no one except the anti-India elements in Pakistan. Benefit no one except the anti-India elements in Pakistan. So next para. Happy Moon Jacob. So Happy Moon Jacob has suggested to initiate some sort of trade relations. As the government sees fit. Some sort of trade relations as the government see fit. Full stop. मतलब गवर्नमेंट को जैसा लगे उसके हिसाब से it can work upon some relations in something. Nonetheless, तो ये तो होना ही था. चलिए अब लास्ट वी हैव टू राइट, थोड़ा सा लिख लेते हैं. लिखिए चाइना इन पाकिस्तान. लास्ट हेडिंग लिखिए. वी ऑल नो व्हाट इज चाइना इज डूइंग. एक पैरा, छोटा सा पैरा. चाइना इन पाकिस्तान. इसमें लिखिए चाइना ऑलवेज कंसीडर्स India as a rival to the Pax Sinica. पैक्स सिनिका माने द सेंचुरी ऑफ चाइना. जैसे पैक्स इंडिका माने द सेंचुरी ऑफ इंडिया. पैक्स अमेरिकाना द सेंचुरी ऑफ अमेरिका. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. इट बेसिकली मींस यू विल बी द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड स्फीयर. जैसे करेंटली वी आर लिविंग अंडर पैक्स अमेरिकाना. 19th century was पैक्स वेटिकाना. ठीक है. ब्रिटेन बिकॉज 19th century was ब्रिटिश रूल. 20th century is अमेरिकन रूल. 21st century में डिस्प्यूट चल रहा है whether it is American rule, Russian rule, Chinese rule और Asian century. देखते हैं नंदलेस क्या होता है. लिखिए इंडिया क्या लिखा हमने. पैक्स सिनिका. हाँ पैक्स सिनिका. फुल स्टॉप. So Pakistan emerges as a swing state. SWING swing. Pakistan emerges as a swing state against India. Full stop. Next para. China as the part of Belt and Road Initiative. China as the part of Belt and Road Initiative has invested billions of dollars in Pakistan. Under the name of
CPEC has invested billions of dollars in Pakistan under the name of CPEC, within bracket China Pakistan Economic Corridor. Under the name of CPEC, within bracket China Pakistan Economic Corridor. ठीक है, full stop, next para. That is why, according to Brahmachillani, Pakistan is the new colony of China. Pakistan is the new colony of China, comma, which exposes India. Pakistan is the new colony of China, comma, which exposes India to a two-front war. To a two-front war scenario. Which exposes India to a two-front war scenario. Full stop. Done everyone? ठीक है. तो इंडिया पाकिस्तान गेट्स ओवर. अब हम लिखेंगे चाइना करना है पहले या बांग्लादेश करते हैं, सिमिलर है. चाइना, यूएस और रशिया साथ में करेंगे. इंडिया इन द गेट पावर्स में. पाकिस्तान एज अ कॉलोनी ऑफ चाइना, कॉमा, विच क्या लिखा है विच के बाद? हाँ, विच एक्सपोजेज इंडिया टू अ टू फ्रंट वॉर. Which exposes India to a two-front war. हाँ, बोलिए. क्योंकि हमारे बीच में और कोई रिलेशन था ही नहीं, टॉक्स हम कर नहीं रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, तो एटलीस्ट ट्रेड तो हो रहा था. तो ट्रेड भी खत्म हो गया, तो वर्चुअली वी हैव नथिंग विद पाकिस्तान राइट नाउ. वो लॉजिक है इसका. बेकार है, करना चाहिए, बिकॉज देखिए इससे आपका, आई एग्री, आपका डोमेस्टिक वोट बैंक नाराज होगा जो आपने क्रिएट करा है आफ्टर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन जरूरत है. देखिए ऐसा नहीं है, अगर पाकिस्तान हमारा नेबर नहीं होता ना तो आई वुड नॉट हैव केयर्ड. नेबर नहीं है, कुछ भी करे आप. इफ यू वांट टू हैव एनिमी इन कनाडा, हो जाए. कनाडा हमारा एनिमी बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ फार फेच्ड कंट्री, वी डोंट केयर, बट योर नेबर कैन नॉट बी योर एनिमी. I told you that the biggest reason America could become a superpower was peaceful neighborhood. अगर आप घर में सिक्योर हैं तभी आप दुनिया पर राज करेंगे. वरना घर में जा रहे हो, बीवी पेल रही है और फिर उसके बाद कपड़े उसी कपड़े से जिससे आप बाहर हीरो बन रहे थे वही उतारे और झाड़ू लगाई, अपने पोछा लगाया, अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो घर पे ज्यादा सही होना चाहिए. चाइना इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में नहीं, टू फ्रंट वॉर. हर यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट. अभी देखिए क्या है, अगर चाइना हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान ना, अगर हम अटैक करेंगे तो चाइना हैज अ रीजन टू कम इन. पहले क्या होता है, अगर चाइना की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो व्हाट वी कैन डू, इफ वी फाइट विद चाइना पाकिस्तान, तो चाइना पे रैशनल नहीं बचता. अगर वो आता भी तो किस आर्ग्यूमेंट पे आता? अब उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो अब वो किस आर्ग्यूमेंट पे आएगा कि आई एम नॉट कमिंग फॉर चाइना, आई एम नॉट कमिंग फॉर पाकिस्तान, आई एम कमिंग फॉर माई इन्वेस्टमेंट. जिसे इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. मैं बोला वी ऑल कंट्री लीव सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसे वो कभी सॉल्व नहीं करती, ताकि इसका इस्तेमाल कर सके फ्यूचर डेट में, कभी तो काम आएगा. कौन? हमने भी ऐसी देखी. हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसीलिए दिया. हम चाहते थे बैड, हमारा गुड रिलेशंस बने. और देखिए बांग्लादेश में हम टॉलरेट नहीं करेंगे. पाकिस्तान डिफरेंट है, इट इज आउट ऑफ द कंट्री. बांग्लादेश इज विद इन इंडिया. तो अगर बांग्लादेश में चाइना आएगा तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. वो छोटा सा सिलीगुड़ी है ना, ऊपर चाइना है ही, नीचे बांग्लादेश हो जाएगा तो सिलीगुड़ी बंद हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट विल बी आउट ऑफ इंडिया. ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा. तो बांग्लादेश को तो, और बांग्लादेश बात समझता है, इसीलिए वो हमारा एडवांटेज उठाता है हर बार. वो समझता है वी आर द नीडी पर्सन हियर.